Okay. So we'll invite people. People will start joining in, and then we may start off in say another 30-50 seconds. Yeah. Perfect. First motto, then yeah. Let's start. Yeah. Abhijit, let's go live. Yeah. So namaskar and hello to all the participants in this Friday Funda webinar program, which at WRC we are conducting every month on any possible Friday, wherein we used to have those topics on which there are no regular programs. However, these topics are very important and relevant for we, the chartered accountants. And since the topics are relevant and the spread of WRC is very large from Maharashtra, Goa to Gujarat, so taking a webinar is the only place wherein everyone from all corners of the region can join and learn from the expert on any particular topic. So I welcome you all to this Friday Funda program. And before we start, let us race for our ICI motto song. I request to please run the motto song. य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता. Thank you, everyone. To start with, may I now request the young and dynamic chairman of WRC, CA Arpit Kabra, to kindly address the participants. Good afternoon, everyone, and welcome to this Friday Fundas program. I think Friday has a special place in all our weekends, in all our weeks, because this is the time when most of us would start winding up. Most of the time would have time to, in fact, go through whatever has happened in the week, take a note of it, plan for the next week, plan for the weekend, and various other things. One of the things that you could do is think about something offbeat, off the topic, and therefore I must congratulate Abhijit Dada to organize these series of sessions which are aimed at offbeat topics, something that we usually don't encounter in our day-to-day life, in our day-to-day schedule. But more importantly, good to know topics. We need to understand them, we need to hear about them, and you never know if there will be a breakthrough for you in one of the areas that you could practice, or you could get some opinion, or you could drive some consultancy. So I think with that in our mind, we have set up this Friday Funda series. These are absolutely fundas, and therefore we get people who are keen on sharing these kind of learnings, who are practicing, and also are thinking about these, how can we implement them in various other facets of our practice. So therefore, in this entire scheme, we welcome Abhay. Abhay is a practicing advocate also, and as you can see from behind, so many journals that he has and so many books that he has. So Evidence Act is an amazing
It's like a Mahasagar. It's like an ocean. The more you deep dive, the more you go around. I think you can keep on exploring and exploring and exploring. Quickly taking up another 2 minutes. These are some of the initiatives that we have launched at WIRC. A startup lab. We are inviting any and everything around startups. Here at WIRC, we are doing some sessions. So today we will be hosting an Angel Network Roundtable Conference. All those who are, angel investors, we have invited them over to have a small discussion and promote the entire startup revolution amongst chartered accountants. So this is a space that, if any one of you or any of your clients who are startups and as a chartered accountant, if you want to explore what all can be done for them in various geographies, in various aspects, I think you should reach out to us as Startup Lab. WRC Media Series, I think we've done amazing sessions in this. The Y stands for young, and therefore that is highlighted specifically for young chartered accountants. These series are promoted, these series are focused for offshore opportunities and capacity building for chartered accountants to serve offshore entities and opportunities. So we've done for US, we've done for Australia, we've done for UAE. We very soon will be doing for Singapore, UAE. So these are the series that you may just keep a watch on. Coming to one of the wonderful concepts at Gurukul at WIRC. This is targeted for all our CFO friends, all the chartered accountants who are CFOs or managers in organization, and they believe they need some training. For example, banks, for example, NBFCs, if they need any training for their staff who are chartered accountants, WIRC will step up and do the training programs for them. We want to do these training programs. You can reach out to us. I think 5 of such, so 5 private limited entities, 5 friends of chartered accountants of the same batch who are working in these entities. They approached us. Collectively, around 40 people, we are now training for all these entities here in WIRC. So you may come to us, you may tell us on a one day, we could bring in, merge in some members who are part of your workforce, who are part of your, private limited organizations or small little organizations or any companies, and they need some specific training, be it auditing, be it entrepreneurship, be it data analytics, be it finance, tax or whatever. We'll be here, WIRC gears up to addresses all these training issues and takes the responsibility of training. The chartered accountant staff in companies are members in industry. One another concept that is launched is the Nest Cafe. Networking, entrepreneurship, soft skills and technology are the 4 pillars of this program. And as you see cafe, these are casual programs that will be held. So Friday evenings, all chartered accountants are welcome at BKC. We will be having some or the other, more like a casual conversation. One or the other VC or a private equity guy or maybe an NBFC guy or a mutual fund would be here talking to you about some areas that you can all work on. So coffee and networking. Networking over a coffee is the theme of Nest Cafe, Friday evenings at WIRC. And of course, the Friday Fundas that we are all today part of. Apart from this, we have the WOW series for women chartered accountants. We are having a lot of programs in technology, that is the Tech Edge series. I think that is one space that people who are interested in technology can reach out to. A lot of these and all of these information are available on our websites, wirc-ici.org, and more importantly, our newsletters. Please read our newsletters. Please look into our newsletters. There's a networking zone that we have launched. Amazing space, small space, but very powerful. People from anywhere across the country are posting requirements in that networking zone. And if you are the ones who need someone, or if you are seeking something, let us know. We'll be happy to post it in the networking zone, and it will be amongst the entire country, if not the region. So that is all what is happening at the WIRC level. We're more happy to reach out to each one of you, hear from you. Let us know if you need anything else, any assistance. Please feel free to reach out to us at WIRC. We are all there on the social media. Please follow us on Instagram, YouTube, Facebook, and LinkedIn. We are all hearing to each and every one. Wherever you are, let's get connected with WIRC. And welcome once again to this wonderful series, Friday Fundas with Abhhay Agrawal and Abhijit Kelkar. Thank you. Over to you, Abhijit. Yes,
Thank you, Chairman Sir, for your wonderful opening remarks. Coming back to today's topic, we all chartered accountants are busy in pursuing various practices and litigation practice. To be very specific, litigation practice related with the taxation matters, be it indirect taxes or direct taxes, is also equally important. But we at WRC have realized that many of us who are doing this, pursuing this practice, are as such not aware about the importance of the Evidence Act whenever they are representing their clients. So, keeping in this mind, today we have organized this particular program wherein we have CA and advocate Abhhay Agrawal as a guest speaker. And to introduce him in brief, please allow me to do this honor. CA Abhhay Agrawal is a qualified chartered accountant and an advocate. He's having a post-qualified experience of more than a decade, and he's engaged specifically into tax litigation practice. He is specialized in income tax appeals and litigation practice. He represents clients before the Bombay High Court, the tribunal, the commissioner appeals, the revenue authorities in across the region, I would say. He's also active member of Income Tax Bar Association, and he is also a guest faculty at National Academy of Direct Taxes, and he is also known for regular contribution he has made to various publications of branch WRC and so on. So a very apt personality, apt person who is advocate as well as chartered accountant to guide all of us the importance of the Evidence Act in litigation matter. Over to you, Abhay sir. The house is all yours. Yes, thank you, Abhijit sir. Good afternoon, everyone. Chairman WIRC, CA Arpit Kabra sir, our very own RCM, Shri CA Abhijit Kelkar sir, and all the dignitaries, all the members of WIRC and the participants who have joined for the session. I would like to firstly compliment WIRC for taking such novel innovations and initiatives. That networking initiative and Gurukul and all those things are, in line with the current trend and also the requirement. And in line with the same, this Friday Fundas very good initiative, wherein we try to explore some offbeat topics, but which could be of very much help to us to get that extra edge in our practice if we know such small things. So as rightly said by Abhijit sir, today's topic is importance of Evidence Act in tax litigation proceedings. So let us start with our today's deliberation. I have prepared a presentation. I will just share it and then we can start. Yes, thank you. So as we can see, Evidence Act is a very old act. It's like Evidence Act 1872. It's a old legislation, but we are still talking about it. That means it has relevance in the present situation when we are facing with the tax litigation. Now we will see how the Evidence Act has, what kind of implications it has while we are dealing with tax litigations. So, as we all know, Income Tax Act in itself is a complete mechanism, a complete code, which has provisions for prescribing levy, recovery and collection of taxes. And income tax authorities are having the powers which have been specified by the provisions of Income Tax Act to do or not to do certain acts. So, still, while we are contemplating Income Tax Act, but there are certain areas wherein we don't have a proper procedure prescribed under the Income Tax Act.
if a procedure is prescribed under the Income Tax Act to do a particular thing in a particular way, then that has to be followed. But if there is no procedure or any way out prescribed in the Income Tax Act, then we check the allied acts, which can give us an idea or a guidance as to how a particular issue has to be resolved. So I have given some examples of allied acts which are commonly used in income tax proceedings. First is Indian Evidence Act 1872, which is the topic for today's discussion. Another example is Code of Civil Procedure 1908, Criminal Procedure Code 1973, and not the least, Indian Penal Code is also one of the allied act which is being used not by the assessee but by the department whenever they want to issue some show cause notice for prosecution. I am sure the members must have seen in the prosecution notice IPC code, some section is definitely mentioned, 192 if I'm not wrong. So let us proceed further. Now, application of Evidence Act in income tax proceedings. So as we have already seen that there is no particular provision in the Income Tax Act which says that certain provisions of Evidence Act will apply, because Evidence Act is an old act and Income Tax Act came much later. The Evidence Act was passed. So the courts have, over the period of years, they have fall back upon the provisions of Evidence Act to regulate the procedures to be followed while adjudicating the Income Tax Act. So one such decision is of Honorable Supreme Court in the case of Joharmal versus CIT 172 ITR 250. So what this decision says, it says that the Evidence Act per se does not apply to the tax proceedings, specifically under the Income Tax Act. However, the Supreme Court emphasized, though strict rules of evidence contained in the Evidence Act do not bind the Income Tax Act, however, the principles of Evidence Act can be applied to the income tax proceedings. So, in a way, the strict procedures or the rules given in the Evidence Act governing the procedure before a civil court or criminal court, those will not be applicable while adjudicating a particular issue under the Income Tax Act. However, the principles which govern the Evidence Act, that will be applicable while assessment is being done or an appeal is being decided under the income tax provisions. So this is very useful. So now we will see how courts over the years have fall back upon the provisions of Evidence Act and applied it to the income tax proceedings. There can be two sets of provisions. One set of provisions which the department relies upon to fasten liability on the taxpayer. Second set of provisions of Evidence Act which we will rely upon to defend our taxpayer. I have incorporated some case laws which can from which we can easily decipher. Right. So let us start with this example. There is a section 110 in Indian Evidence Act 1872. What it says: burden of proof as to ownership. When the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner. So in simple language, if you have अगर आपके पास कोई चीज का पोजीशन पाया गया है, so ये बर्डन जिसके पास पोजीशन मिला है वो चीज का, उसके ऊपर बर्डन है ये प्रूव करने का कि वो ओनर नहीं है. डिपार्टमेंट का बर्डन नहीं है ये प्रूव करने का कि वो ओनर है. so ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो टैक्स पेयर के अगेंस्ट वर्क करता है. सेक्शन 69A मैंने रिप्रोड्यूस किया है. आई विल रीड आउट. Wherein any financial year the assessee is found to be owner of any money, bullion, jewelry or other valuable article. 69A की लैंग्वेज है found to be the owner. But अगर सपोज कोई टैक्स पेयर के पास कुछ बुलियन ज्वेलरी मिल जाती है एंड वो बोलता है कि मैं ओनर नहीं हूं इसका, सो 69A अप्लाई नहीं होगा, वो ओनर नहीं है.
लेकिन इसका बर्डन किसके ऊपर है प्रूव करने का कि वो ओनर है कि नहीं है? सो कोर्ट्स ने कहा है कि नहीं, यहाँ पे सेक्शन 1110 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा, जो बोलता है कि अगर पोजीशन मिला है, सो जिसके पास से पोजीशन मिला है वो उसका बर्डन है प्रूव करने का कि उसका वो ओनर नहीं है, डिपार्टमेंट का बर्डन नहीं है ये बताने का कि नहीं वो पोजीशन उसके पास से मिला है एंड वो उसका ओनर है। सो एग्जांपल, ये हम जो डिसीजन देख रहे थे चौहारमल वर्सेस सीआईटी सुप्रीम कोर्ट का, इसमें टैक्स पेयर के पास से फॉरेन मेड वॉचेस मिली थी एंड उसने क्लेम किया था कि ये मेरी नहीं है। सो देन अगेन क्वेश्चन आया कि अगर वो वॉचेस उसकी नहीं है वो बोल रहा है तो 69A अप्लाई होगा क्या? सो आई थिंक हाई कोर्ट तक उसको रिलीफ मिल गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने फिर सेक्शन 110 ऑफ एविडेंस एक्ट को इन्वोक किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये पोजीशन इनके पास से मिली है एंड टैक्स पेयर बता नहीं पा रहा है कि वो ओनर क्यों नहीं है, वो प्रूव नहीं कर पा रहा है और बर्डन उसका है एंड इसलिए ओनरशिप भी उसकी ही मानी जाएगी। ये डिसीजन मैंने आगे के स्लाइड्स में भी रेफर किया है। सिमिलर सेक्शन पे एक और डिसीजन है मद्रास हाईकोर्ट का, सीआईटी वर्सेस KTMS मोहम्मद 228 ITR 113। इसमें टैक्स असेसी के पास से करेंसी रिकवर हुई थी। So question before the court was whether the department needs to prove the assessee's ownership. Assessee contended the cash did not belong to him. Then the honorable court applied section 110 of the Evidence Act and they concluded onus is on the person in possession of the money to prove that they are not the owner. So burden was with the assessee who was found with the possession of the currency, and if he could not discharge that onus, then it will be treated as his undisclosed investment and section 69A would be applicable. आगे बढ़ते हैं, अथॉरिटी ऑफ असेसिंग ऑफिसर एंड रूल्स ऑफ एविडेंस। सो एज वी ऑल नो, द असेसिंग ऑफिसर इज अ क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी एंड राइट, he is not bound by the technical rules of evidences or pleadings. He can, so assessing officer की authority बहुत ज़्यादा है in terms of what kind of evidence he can appreciate. He can consider evidences or materials which even are not strictly accepted as an evidence before a court of law. All those evidence also AO can appreciate and consider. And he has a wide discretion while performing assessments, and he is not bound by the civil procedure code. He is bound by the civil procedure code, but not for the point that evidences which he can appreciate that may not fall strictly as per the civil procedure code, but even for making assessment for determining taxable income, he can consider those evidences. So this decision, Dhakeshwari Cotton Mills Limited versus CIT सुप्रीम कोर्ट, इट्स लैंडमार्क डिसीजन। ये डिसीजन में आई टेल यू इन जिस्ट क्या हुआ था। जैसे असेसी की कॉटन मिल थी एंड उन्होंने रिटर्न फाइल किया, बट असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट के समय बोला कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट बहुत कम दिखाया आपने। सो मैं उसको अज्यूम करता हूँ 40% पे। भाई 40% कहाँ से लाया? वो असेसिंग ऑफिसर का खुद का एक थिंकिंग था कि कॉटन मिल्स अराउंड इतना परसेंट अर्न कर रही है, वो साल में कॉटन मिल्स बहुत अच्छा काम कर रही है। असेसी ने वो चैलेंज किया ट्राइब्यूनल के सामने। ट्राइब्यूनल ने कहा नहीं, सीआईटी अपील के सामने, सीआईटी अपील ने भी उसको अपील किया। फिर ट्राइब्यूनल के पास गए, ट्राइब्यूनल ने कहा कि नहीं 40% बहुत ज़्यादा है, हम 35% कर देते हैं। फिर भी असेसी वॉज नॉट कन्विंस्ड, ही वेंट टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में रिलीफ नहीं मिला। देन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो ये करना है, अपना असेसमेंट्स करना है, ये एविडेंस या मटेरियल के बेसिस पे करना है, ना कि कोई भी एक यू कैन नॉट डू इट बेस्ड अपॉन योर सस्पिशन, सरमाइसेस या एस्टिमेशन पे नहीं कर सकते आप। सो ये डिसीजन यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है एंड इवन प्रैक्टिस में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जहाँ पे भी एड हॉक एडिशंस होते हैं, एस्टिमेशंस होते हैं। नाउ entries in books of account, section 34 of Indian Evidence Act 1872. Yes, so section 34 of Indian Evidence Act, यहाँ पे पहले मैंने दो डिसीजंस दिए हैं, देन
हम सेक्शन 34, पहले सेक्शन 34 ले लेते हैं. सेक्शन 34 स्क्रीन पे है. Entries in books of account, including those maintained in an electronic form, when relevant. So, entries in books of account, including those maintained in electronic form, regularly kept in the course of business, are relevant wherever they refer to a matter into which the court has to inquire. But such statements shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability. Correct. So, इसमें 2-3 important points है. ये प्रोविजंस, ये इशू जनरली आता है जब सर्च एंड सीजर पे कुछ बुक्स, डायरीज एंड नोटबुक्स या लूज पेपर्स ये सब इम्पाउंड होते हैं. देन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो रिकॉर्डिंग किया है मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में या नोटबुक्स पे रिकॉर्डिंग किया है, उसका क्या वैल्यू है, एविडेंशियरी वैल्यू क्या है इसकी. सो इस ये पॉइंट पे 2 लैंडमार्क डिसीजंस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जो क्लैरिटी देते हैं, जिन्होंने सेक्शन 34 को कंसीडर करके इनकम टैक्स के प्रोविजंस में डिसीजन दिया है. राइट. सो वन ऑफ द डिसीजन इज ऑफ जैन हवाला डायरीज केस और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस वीसी शुक्ला 1998, वेरी लैंडमार्क डिसीजन, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज जैन हवाला डायरी केस. ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटबुक्स में अगर कोई एंट्रीज मिली है एंड वो नोटबुक के फॉर्म में चाहिए, बाउंड चाहिए पेजेस, एंड उसमें जो एंट्रीज और वो जो नोटबुक मिली है वो बिजनेस के रेगुलर कोर्स में मेंटेन किया हुआ है, उसमें एंट्रीज मिली है, सो दोज विल बी कंसिडर्ड एज अ बुक्स एंड द एंट्रीज contained therein will have a probative value or a corroborative value. However, those entries alone cannot fasten tax liability on a taxpayer. There has to be an independent evidence to support the entries made in the books of account. And ये basis पे CBI versus शुक्ला सुप्रीम कोर्ट केस में, सिंस बुक मिली थी, डायरीज मिली थी, एंट्रीज थी, लेकिन उसका एक इंडिपेंडेंटली एविडेंस नहीं था उसको कॉरोबरेट करने के लिए, सो वो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के फेवर में रूलिंग दिया था. सो सिमिलर पॉइंट पे एक और डिसीजन है जो अभी रिसेंट में है, कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये केस में भी आई एम श्योर हमने सुना होगा, न्यूज में भी आता था, बिरला एंड सहारा ग्रुप्स पे रेड हुई थी, सर्च सीजर ऑपरेशन हुआ था, काफी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिले थे इन द फॉर्म ऑफ लूज पेपर्स, कंप्यूटर प्रिंट आउट, पेन ड्राइव्स एक्सेट्रा. अब ये सारे पेपर्स में भी कुछ इंक्रिमिनेटिंग फाइंडिंग्स थी या नोटिंग्स, नॉट फाइंडिंग्स, नोटिंग्स थी. बट क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज whether this material will be considered as an admissible evidence, and based on which whether Supreme Court can direct special investigation into those taxpayers or the or the persons whose reference was made in those notings. So in this case, the Supreme Court noticed that department failed to substantiate the nature and source of receipts and payments as per the notings in the diaries seized. Entries were made on the loose papers and sheets which were not an admissible evidence as per section 34 of the Evidence Act. And even if there are such materials which can be considered to be entered in a books of account, but the entries alone cannot fasten the liability, as we have seen in CBI versus Shukla case. The same principle, relying on the same decision, the Supreme Court again ruled in favor of the assessee and held that there has to be some independent evidence to corroborate the entries made in the books of account to fasten the tax liability on any taxpayer. And accordingly, no investigation was ordered by the Supreme Court based on the incriminating material found. So we have seen section 34 of Indian Evidence Act, which will be invoked by the department wherever there are search and seizure procedures happening, and they will try to say that the document impounded is a book of account, is part of your regular accounting, and therefore it has a evidentiary value. But then we have to see whether those entries in the books of account found or seized,
whether we have whether there is any corroborative evidence which substantiate those entries. If there is no such evidence, then we can rely on these decisions and contend that additions or additional tax liability may not be fastened. Now, admissibility of evidence, oral, documentary, and electronic, right? So, evidence का क्या definition है? Income Tax Act में नहीं defined है. Evidence is defined, but it is defined in Evidence Act 1872. Evidence Act क्या कहता है? All statements which the court permits or requires to be made before it by witness in relation to matters of fact under inquiry, such statements are called oral evidence. All documents, including electronic records produced for the inspection of court, such documents are called documentary evidence. So in short, evidence can be of three types: oral, documentary, electronic. Electronic records, how they can be treated as an admissible evidence, we will see section 65B of the Indian Evidence Act towards the end of this session. It's a very important topic for today. Now, for now, I would say that there is a procedure prescribed which needs to be followed before an electronic evidence can be admitted as an admissible evidence by a court, even including the income tax authorities. So we will move ahead. Oral evidence, documentary evidence, we all know by their very nature. Statement of assessee as part of evidence and law of retraction, right? So this is also an important piece of evidence. The admissions, जो statement record होता है SSC के, so हमें पता है कि दो टाइप के मेजरली दो सिचुएशन में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं. एक तो जब सर्च सीजर एक्शन होता है, सेक्शन 132 सबसेक्शन 4 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है एसएससी का एंड और भी लोग जिन पे सर्च हुई है. सेक्शन 132 सबसेक्शन 4 इटसेल्फ प्रोवाइड्स दैट जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है it will be treated as an evidence. So definitely उसका काफी वैल्यू है 132(4) में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है. vis-a-vis आप कॉन्ट्रास्ट में देखेंगे तो सर्वे में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है 133A, उसमें कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं रहती है फॉर 2-3 रीजंस. फर्स्ट इज कि वो ओथ पे नहीं रिकॉर्ड होता है एंड vis-a-vis 132(4) का जो स्टेटमेंट है ओथ पे रिकॉर्ड होता है. एंड कोर्ट्स ने ये इंटरप्रेट किया है कि जहां पे रिक्वायरमेंट थी ओथ पे रिकॉर्ड करने की और उसको एविडेंस मानने की, वो स्पेसिफिकली एक्ट ने प्रिस्क्राइब किया है, विच इज सेक्शन 132(4). बट सेम रिक्वायरमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट अंडर द पावर्स ऑफ ऑफिसर व्हाइल ड्यूरिंग अ सर्वे प्रोसीडिंग अंडर 133A. ये दोनों चीज एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है. अब एविडेंस एक्ट कहाँ आता है इसमें, मैं बताता हूँ. अब अगर सपोज हमें हमारा स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किया है 132(4) में रिकॉर्ड हो गया है, क्या वो एक फुल एंड फाइनल एविडेंस है हमारे अगेंस्ट? सो एविडेंस एक्ट कहता है कि नहीं, जो भी आपका एडमिशन रिकॉर्ड होता है इट इज अ रेबटेबल, इट्स रेबटेबल. आप उसको रेबट कर सकते हैं एंड वो कंक्लूसिव नहीं रहता है. हाउएवर इट विल एक्ट एज एन एस्टॉपल इन फर्दर प्रोसीडिंग्स. अगर आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया है, वो फाइनल या कंक्लूसिव आपके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप उस पर कोई एक्ट नहीं करते हैं, आप उसको चैलेंज नहीं करते हैं, तो आपके लिए वो फर्दर प्रोसीडिंग में एक एस्टॉपल के जैसा काम करेगा. आप फिर उसको डिनाई नहीं कर पाएंगे आगे. इसको ये प्रोविजन सेक्शन 31 ऑफ एविडेंस एक्ट में दिया है. अब हम बोल रहे हैं कि वो कंक्लूसिव नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि सेक्शन 24 ऑफ एविडेंस एक्ट बोलता है कि अगर एडमिशन हैज बीन रिकॉर्डेड and it is induced by threat or promise, then it will be inadmissible under section 24 of the evidence act. So अगर कोई हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता है एंड अगर हमें लगता है कि वो थ्रेट या हमें अनड्यू प्रॉमिस के अंडर हमने किया है, तो हम उसको रिट्रैक्ट कर सकते हैं. रिट्रैक्शन हैज टू बी डन विद इन रीजनेबल पीरियड. एंड इनकम टैक्स एक्ट में रिट्रैक्शन करने का कोई प्रोविजन नहीं है, बट एविडेंस एक्ट बोलता है कि आप अगर थ्रेट या प्रॉमिस से हुआ है रिकॉर्ड आपका स्टेटमेंट, तो इनएडमिसिबल नहीं है. सो यहाँ पे हम वो प्रोविजंस का यूज करके वैलिड रिट्रैक्शन करके सही फैक्ट्स रिकॉर्ड पे डाल सकते हैं. सीबीडीटी का सर्कुलर भी है कि थ्रेट ऑन कोर्शन में स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. वो आप वी कैन फाइंड इट. नाउ admissibility of evidence, oral, documentary and electronic.
सो ये हमने देखा एविडेंस का, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉस एग्जामिनेशन. सो हमने अभी तक एविडेंस, टाइप्स ऑफ एविडेंस देखे हैं एंड एडमिशंस देखे हैं. अब हम देखते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एविडेंस कलेक्ट करने का. सो इनकम टैक्स एक्ट में एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है, लेकिन सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है जो बोलता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन इज क्रूशियल इन लॉ केसेस एज इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग अ विटनेस बाय द अपोजिंग पार्टी. एंड इसका प्रोसीजर क्या है एग्जामिनेशन का, वो सेक्शन 138 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंदर दिया हुआ है. पहला होता है, हम एग्जाम्पल के से समझते हैं, जब असेसिंग ऑफिसर कोई विटनेस को एग्जामिन करता है तो उसको एग्जामिनेशन इन चीफ कहेंगे. अब वो विटनेस को अगर टैक्स पेयर क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं. अगर अब सेम विटनेस को असेसिंग ऑफिसर फिर से री एग्जामिनेशन करना चाहता है तो इट इज कॉल्ड एज ऑप्शनल री एग्जामिनेशन. सो ये 3 स्टेजेस है जो सेक्शन 138 ऑफ एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है. हम चाहे तो जब असेसमेंट चलता रहता है, जब अगर असेसिंग ऑफिसर कोई विटनेस के स्टेटमेंट पे रिलाई करता है तो हम उनको बोल सकते हैं कि नहीं, हमको क्रॉस एग्जामिनेशन चाहिए, एंड सेक्शन 138 का हम उनको रेफरेंस भी दे सकते हैं. देन सेक्शन 146 है जो कहता है कि आप विटनेस से और भी क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, नॉट नेसेसरी फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, आप उसकी वेरासिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी टेस्ट करने के लिए उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप जो स्टेटमेंट कह रहे हैं, आपके पास क्या बेसिस है, आपने वो देखा है क्या, वट एवर, लाइक जहाँ भी जो हम पूछना चाहे वो अलाउ है. 146 में हम उसकी टेस्ट कर सकते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को. एंड ऑफ कोर्स इवन एविडेंस एक्ट के प्रोविजन तक नहीं भी गए हम तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आल्सो गवर्न, providing an opportunity of hearing, cross examination, fairness, and audi alteram partem, everything is there in the age old principles. And we have a decision of Supreme Court, and there are many decisions. I have just put in one, Andaman Timber Industries, which also says that if the assessing officer wants to rely on a witness or a statement, then he has to provide an opportunity of being heard to the taxpayer before relying on such a witness or a statement. Right. अब हम आते हैं importance of compliance with section 65B of the Evidence Act for Electronic Records. इसके पहले let me just check एक point. Statement. राइट. सो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सेक्शन 65B of the Evidence Act, this governs the procedure which needs to be followed if the authority wants to rely upon any electronic evidence and wants to submit that as a evidence before a court of law. So there are some provisions. Now, in cases when electronic records are seized and the department relies on it as a secondary evidences, such as Excel sheets, email communications, etc. In those cases, we should invoke the provisions of section 65B. Now, before going to that, what do you mean by secondary evidences? Now, secondary evidences is defined in the section 62 of Indian Evidence Act. ये वो एविडेंस है जो कि अदर देन द ओरिजिनल एविडेंस है, लाइक फोटोकॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज अ सेकेंडरी एविडेंस, दैट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज अ प्राइमरी एविडेंस. सो हम जो भी कंप्यूटर रिकॉर्ड के एक्सेल फाइल, शीट्स, ईमेल कम्युनिकेशन देंगे, इट्स अ सेकेंडरी एविडेंस क्योंकि हम उसकी एक फोटोकॉपी देते हैं, कॉपी देते हैं. सो अब वो कब एडमिसिबल रहेंगे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, उसके लिए सेक्शन 65B ऑफ एविडेंस एक्ट ने पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है. एंड अगर वो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब नहीं हुआ तो क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस है, मैंने स्लाइड पे लिखा है, अनवर पीवी वर्सेस बीके बशीर एंड अर्जुन पंडित राव. ये 2 डिसीजन है जहां पे उन्होंने कहा है कि अगर रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 65B अगर फॉलो नहीं होती है एंड without following those requirements procedure the department wants to rely upon electronic records as an evidence, then those will not be admissible as an evidence.
सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमारे अगेंस्ट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज एविडेंस पुट अप हो रहा है डिपार्टमेंट के साइड से, सो अगर 65B के प्रोविजंस प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो हम कैसे चेक करेंगे? 65B क्या कहता है? इट गवर्न्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. नाउ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मस्ट बी presented with a certificate that identifies the record and describes its production. So कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कॉपी, लाइक फॉर एग्जांपल आप ले लो एक्सेल शीट का प्रिंट आउट भी दे रहे हैं, सो उसके साथ एक सर्टिफिकेट होना जो उसको आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को, और वो कैसे प्रोड्यूस हुआ उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है. ये इंफॉर्मेशन वो डिवाइस के बारे में भी, सर्टिफिकेट शुड ऑल्सो इंक्लूड डिटेल्स अबाउट द डिवाइस यूज्ड. Along with that device should also comply with the specified condition under section 65B2. वो क्या है? वो बोलते हैं कि वो डिवाइस रेगुलरली यूज्ड में होना, एंड वो रेगुलर कोर्स में उसमें एंट्रीज रिकॉर्ड हुई है. ये सब सबसेक्शन 2 ऑफ 65B में दिया है, वो हम पढ़ सकते हैं. सो वो सर्टिफिकेट किसने साइन करना चाहिए? सर्टिफिकेट शुड बी साइंड बाय अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल हु हैज द कस्टडी ऑफ दैट डिवाइस and who is responsible for managing that device. उन्होंने साइन करके देना चाहिए. 65B is very crucial for admissibility of electronic evidence in legal proceedings. So जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट के सामने जाता है या डिपार्टमेंट रिलाई करना चाहता है, तो अब ये प्रोविजंस उसके साथ होना बहुत अनिवार्य है, मैंडेटरी है, कोर्ट्स ने कहा है. अदरवाइज क्या होगा कि वो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जो एविडेंस है वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं है. उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, रिलायबिलिटी उसकी टेस्ट करने के लिए ये प्रोविजन बनाया गया है, एंड ये टैक्स पेयर के बहुत काम आएगा. एंड यही इसी को यूज करके एक डिसीजन अभी मद्रास हाईकोर्ट ने दिया है रिसेंट में, इन द केस ऑफ वेट्रीवेल मिनरल्स वर्सेस ACIT मदुराई. यहाँ पे उन्होंने असेसमेंट ऑर्डर को सेट असाइड किया. अगेन बैक टू द फाइल्स ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर. व्हाई? One of the reason was that certain evidences were put before the court, which were so-called electronic record, which were the copies of Excel sheet, Excel workbook, etc. And the taxpayer said that provisions of section 65B of Evidence Act was not followed, and therefore those evidences were inadmissible under the eyes of law, as held by the Honorable Supreme Court. Therefore, the Honorable Madras High Court accepted the taxpayer's contention, and this directed the respondent department to strictly comply with section 65B of Indian Evidence Act if they want to rely on any electronic document by way of secondary evidence. So ये decision का use करके, provision of section 65B of evidence का use करके हम assessment proceedings के समय भी ये point को raise कर सकते हैं कि जो भी electronic record है, it should be duly authenticated. And the procedure as per section 65B of Indian Evidence Act should be followed before any reliance is placed on such evidence. Right. So अब एक और provisions है इसके, section 106 and section 114G. अब ये दोनों provisions ये काम आते हैं डिपार्टमेंट को. 106 क्या बोलता है? Burden of proving a fact specially within knowledge. When any fact is specially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him. Example: A is charged with traveling on a railway without a ticket. The burden of proving that he had a ticket on him is on him. So जो knowledge assessee के पास होना चाहिए, so burden उसके ऊपर है वो चीज को prove करने का. For example, assessment proceedings के दौरान अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, तो ये अज्यूम किया जाता है कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स है, आपके नॉलेज में है, इसलिए आपके ऊपर बर्डन है उसको देने का. एंड इसी के साथ सेक्शन 114 कहता है, अगर आप सपोज अगर आप वो बर्डन नहीं फुलफिल कर पाते हो, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हो, तो क्या? सेक्शन 114 ऑफ एविडेंस एक्ट सब क्लॉज G, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक कई ऑर्डर्स, असेसमेंट ऑर्डर्स या अपीलेट ऑर्डर्स में आपने देखा होगा जहाँ पे कि एक्स पार्टे ऑर्डर्स होते हैं, नोटिसेस आए लेकिन हमने टैक्स पेयर ने सबमिशंस फाइल नहीं किया, तो वहाँ पे वो दे रिलाई ऑन एविडेंस एक्ट सेक्शन 114 सब क्लॉज G. कोर्ट में presume existence of certain facts. What the court will presume? The court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened,
regard being had to the common course of natural events, human conduct, and public and private business in their relation to the facts of peculiar case. Subclause G says that evidence which could be and is not produced would, if produced, be unfavorable to the person who withhold it. So अगर आपसे कुछ एविडेंस मांगा है असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में, आप उसको नहीं दे रहे हैं, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा अंडर सेक्शन 114 सब क्लॉज जी दैट वो एविडेंस अगर आप प्रोड्यूस करते तो आपके फेवर में नहीं रहता, अनफेवरेबल है, इसलिए आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो. सो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप असेसमेंट के समय एविडेंस सब पूरे प्रोड्यूस करें जो भी असेसिंग ऑफिसर मांग रहा है. अगर आप नहीं करते हैं so ये provisions वो invoke करते हैं. Practically we have seen that these provisions have been invoked and the ex parte orders have been passed, even appeals have been dismissed. So very important to note this provision. So we have in one more, yes. इस पे भी एक example, I have taken a case study of a decision in the case of Commissioner of Income Tax versus Kolkata versus Sanjay Jain. In this case, assessee taxpayer was found with some cash receipts during the year, and he said कि वो cash receipt sale of shares से आई है. लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने जब बोला कि आप शेयर सेल करके आइए तो आप डॉक्यूमेंट्स दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट नोट, सेल नोट, कुछ दीजिए. असेसी नहीं दे पाया, इवन बता नहीं पाया कि किसको सेल किया है, किससे खरीदा है, कुछ नहीं बता पाया. सो ये केस में असेसिंग ऑफिसर ने, कमिश्नर अपील्स ने इन्वोक किया प्रोविजन ऑफ सेक्शन 106 and section 114G of the Evidence Act, and उन्होंने कहा कि आप पहला आपके ऊपर बर्डन है डिटेल्स देने का अगर आप कुछ चीज क्लेम कर रहे हैं. सेकेंडली अगर आप नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा आप नहीं दे रहे क्योंकि वो आपके अनफेवरेबल है. तो ये दोनों प्रोविजंस का यूज करके असेसी के अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी फैशन हुई एंड उसको रिलीफ नहीं मिल पाया. So as I have said in the starting, there can be two sets of provisions. One set of provisions which assessee can use for making his tax defense of his assessee, and there are other set of provisions which the department use to fasten liability on the assessees. So we will just like to conclude what is now, after reading all these pointers, what do you think that what is the relevance of the Evidence Act in tax proceedings? So in India, Evidence Act is commonly associated with civil and criminal proceedings. However, tax authorities also refer to its principles when relying on documents or other evidence to determine tax claims. So जहाँ भी इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफिक प्रोसीजर या गाइडेंस नहीं है रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, डिस्चार्ज ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, ये सभी जहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है गाइडेंस, तो हम एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई कर सकते हैं, उसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं. And as we have seen, courts have been falling back upon those provisions and utilizing those provisions in the income tax proceedings. So therefore, एविडेंस एक्ट का एक बेसिक नॉलेज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसके प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. एंड इसलिए ये सेशन में हमने ट्राई किया है कि जो जो प्रोविजंस अभी तक एविडेंस एक्ट के कोर्ट ने नोटिस लिया है एंड उसको अप्लाई किया है, उसके बेसिस पे क्या केस लॉज है, एंड ऑल दोज थिंग्स आई हैव ट्राइड टू पुट इन अ समरी फॉर्म. And I hope we are now aware of all these provisions, and अब हम जो भी decisions पढ़ेंगे तो हम एक वो एंगल से देखेंगे कि हाँ एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस को रेफर हुआ है क्या, उस पर रिलायंस आया है क्या, एंड आएगा, बहुत जरूरी आएगा. बिकॉज अभी जो टैक्स इवॉल्व हो रहा है, टैक्सेशन, लिटिगेशन, एवरीथिंग इन्वॉल्विंग विद द फेसलेस थिंग, एविडेंस क्या है, एविडेंस कौन सा एडमिसिबल है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस आने वाला है. बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ इन ब्लैक एंड वाइट. सो you need to safeguard your taxpayers, use the provisions of law in Evidence Act while preparing or submitting yourself before the tax officer during the assessment proceedings. So I think that's it from my side on law of evidence. And Abhijit sir, we can take few questions and answers. Yes, certainly. Wonderful session, CA Abhhay Agrawal ji. Lot of things to learn and will be used for various litigation practices, not only with respect to
tax, but also otherwise like PMLA or other relevant tax. So we have kept 5 to 10 minutes for some questions. The forum is open. If anybody is having any question, please ask the same. Chat box, there is one question. Yeah. How can reliance be placed on the oral evidence during the assessment? This is the question. Right. So oral evidence, when we say, that means some evidence which is either coming from the taxpayer himself or from some other person or a third party or a witness. So what can be done is like अगर कोई आपको लगता है कि आपके केस में हेल्प करता है कोई विटनेस का ओरल एविडेंस, सपोज आपका लाइक एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे बोगस परचेजेस है या कोई अनसिक्योर्ड लोन है, ये सब केसेस में अगर एविडेंसेस आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दे रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि आप ओरल एविडेंस चाहिए विटनेस का तो प्लीज रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट, दैट विल बी अ ओरल एविडेंस कम डॉक्यूमेंट्री evidence as well when the statement of that person is recorded. और अगर आप कोई अपीलेट अथॉरिटी के सामने है, वहां पे भी आप जाके विटनेस अगर आपके साथ है कोई पार्टी तो आप उसको बुला सकते हैं, कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर ये पार्टी है जिसके साथ मैंने ट्रांजैक्शन किया है, एंड आप वो ट्रांजैक्शन को कंफर्मेशन करने के लिए आप इनका ओरल एविडेंस आप रिकॉर्ड कीजिए. द कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स, दे हैव दैट अथॉरिटी, दे आर कोर्ट ऑफ लॉ, they will record the oral evidence of that particular person. So this depends, आप अपने असेसमेंट्स के समय आप वो रिक्वेस्ट रेज करके ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास वो विटनेस है जो आपके फेवर में ओरल एविडेंस देने के लिए रेडी है. The next question is, sir, how much does an affidavit of a person hold significance as an evidence in assessment proceeding? Right. So हम जो एफिडेविट सेल्फ का देते हैं वो एक काइंड ऑफ एन हैज द सेम वेटेज एज एन एडमिशन, जो हम एडमिशंस देते हैं, जो हम खुद होके बोलते हैं. सो इट डज नॉट हैव अ कोरोबोरेटिव एविडेंस, लाइक आप थर्ड पार्टी से उसको कोरोबोरेट नहीं कर सकते. आप कह रहे हैं आपके हिसाब से ऐसा सही है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज आपको उसको कोरोबोरेट करने के लिए देयर हैज टू बी सम other evidence, then only it will have weightage before the authority, because otherwise it's kind of admission. आपने अपना गुनाह कबूल कर लिया, बट कोर्ट्स ने कहा है कि नहीं, वो आप जो एडमिशंस लेते हैं वो कंक्लूसिव नहीं है, फाइनल नहीं है, आपको कुछ ना कुछ उसको एविडेंस के साथ बैकअप करना है, आप उसको रेबट भी कर सकते हैं. सो इसलिए आप एफिडेविट देते हैं, वेल एंड गुड, बट उसके साथ आप ट्राई कीजिए कुछ कोरोबोरेटिव एविडेंस देने का. खाली एफिडेविट देके अपना स्टेटमेंट देके उसके बेसिस पे I really doubt कि income tax authorities accept that as the only evidence. It has to be supported by some other corroborative evidence, especially from third party or third source. The next question is, in income tax assessment, whether cross-examination is mandatory in absence of any independent evidence other than statement recorded? Yes. So during assessment proceedings, अगर assessing officer wants to rely upon a statement of a third party, then as we have seen, evidence act के provisions है. First is पहले assessing officer should identify that party and examine that party. That is the first stage. And if he finds that the statement of that party can be relied upon against the assessee, then he is bound to give a cross examination opportunity to the taxpayer. ये एविडेंस एक्ट में भी दिया हुआ है, ये हमारे डिसीजंस, कोर्ट ऑफ लॉ के डिसीजंस है, सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, सब डिसीजन, सब केस लॉज यही कहते हैं कि असेसी के अगेंस्ट कोई भी मटेरियल आप यूज करना चाह रहे हैं या स्टेटमेंट यूज करना चाह रहे हैं तो आप उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए उसको रिबट करने के लिए. इवन हम बिल्कुल मांग सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन असेसिंग ऑफिसर से, अगर कोई भी स्टेटमेंट के ऊपर वो रिलाई कर रहा है, डेफिनेटली वी शुड आस्क फॉर अ क्रॉस एग्जामिनेशन. एंड इफ इट डज नॉट गिव अस अ क्रॉस एग्जामिनेशन एंड गोज एंड पास द ऑर्डर, then that is a major defect, and ये defect के against हम grounds ले सकते हैं appellate authorities courts के सामने, and they listen to us because यहाँ पे principles of natural justice breach होता है.
So definitely we should ask for cross examination. Fine. The next question is, within what period can we retract our statement during search or survey? Right. So there is no time limit provided under the Income Tax Act, neither in Evidence Act. So what we suggest is that it should be retraction. What the court says is retraction should be done within a reasonable period. And what will be that reasonable period? That has to be seen from the facts. Like आपके यहाँ search हुआ है, अगर वो search हफ्ता भर चला है, तो उसके बाद आपने कितने दिन के अंदर वो रिट्रैक्शन कर लिया, या 15 दिन चला है तो उसके बाद कितने दिन में रिट्रैक्शन कर लिया. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर्च हुआ है एक डेट पे एंड हम उसके 6 महीने बाद, साल भर बाद उसको रिट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दैट क्रिएट्स डाउट ऑन द क्रेडिबिलिटी. आप इतने दिन क्यों रुके थे? अगर आप रिट्रैक्ट कब कर सकते हैं? दो सिचुएशन में, थ्रेट कोअर्शन के कारण वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है. तो अगर आप 6 महीने बाद कर रहे हो तो आपको क्या थ्रेट था? आपका सर्वे कंप्लीट होने के बाद आपने इमीडिएटली क्यों नहीं रिएक्ट किया? सो एडवाइजेबल है कि आप जितना जल्दी हो सके उसको रिट्रैक्ट कीजिए. आप जितना लेट रिट्रैक्ट करेंगे उसको आफ्टर थॉट ट्रीट कर सकते हैं कोर्ट्स. Okay, the next question is, will the impounded material along with assessee's statement be conclusive enough, or some other corroborative evidence would be required to be produced by the department? Impounded with assessee statement will be some. So I understand impounded material along with searched person statement. So impounded material, if there is something incriminating found relating to some person, some transaction between some persons, then yes, those persons' statement should be recorded. And as a taxpayer, if that statement is, or that document or the statement of the person is going to be used against you, you should ask the department to provide the copy of that statement and also provide an opportunity to cross-examine. And without that, the procedure as per law will not be completed, and that statement cannot be taken as an evidence before the court of law, because it will be treated as an untested testimony of a witness. That needs to be tested by giving you an opportunity, by giving assessee an opportunity of being heard. The next question is, cross-examination can be asked by anyone, that is either assessee or department, or only department can ask in case of unsatisfied reply from the assessee? So firstly, right. So as I have said, there is a procedure. There is a witness, एक कोई party है, उसके statement को department assessing officer record करता है. That is the first stage. And वो obviously वो statement में कुछ ऐसी चीजों बोलता है जो assessee के against होती है. So as a assessee, you get an opportunity to apply for copy of that statement and also to cross-examining that witness. इसके बाद department चाहे तो follow-up examination again कर सकता है वो witness का. So that is provided under section 146 of Evidence Act. So yes, both the parties, department हो या assessee हो, वो witness को examine, cross-examination कर सकती है. Yes. Perfect. The next question is, sir, if we have submitted any statement in submission in assessment proceeding, can we change our stand in appeal? Like any person is retired and in appeal, we will say he is working somewhere or has any other source of income. See, assessment proceeding is a judicial proceeding. Section 136 of Income Tax Act. It's a judicial proceeding. आप जो भी stand लेते हैं, जो भी facts record होते हैं, वो judicial process है. It has a weightage. So, frankly speaking, from my experience, अगर आप appeal में stand change करते हैं, facts change करते हैं, तो it won't be taken as very likable by the authority. वो आपके ऊपर question करेंगे. And even कई cases में हमने देखा है कि court कहता है कि the assessee has been changing stands before assessment, before appeal. कंटिन्यूस स्टैंड अगर आप चेंज करते हैं तो आपके क्रेडिबिलिटी पे डाउट होता है. बट हैविंग सेड दैट, अगर देयर इज सम रीजन टू इट, लाइक फॉर एग्जांपल असेसमेंट के समय आपके पास असेसी ने पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, या आपको प्रॉपर बताया नहीं, या उसको भी नहीं पता था कि क्या एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन है, सो वो केसेस में ऑफ कोर्स आप क्लैरिफाई कर सकते हैं अपीलेट प्रोसीडिंग्स में. आप बता सकते हैं कि मैं स्टैंड क्यों चेंज कर रहा हूँ. सो यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस. Otherwise, if you want to change your stand just for the sake of it, it won't work.
Fine. Next question, whether cross-examination got recorded in writing, and if yes, then who record this statement? राइट सो इसमें मैं दो एंगल से बताता हूँ. अभी तो फेसलेस हो गया है. इसके पहले जब फेसलेस नहीं था तब असेसिंग ऑफिसर एक विटनेस को समन्स इशू करता था, बोलता था कि आप आओ मेरे यहाँ, मेरे ऑफिस में आओ एंड आपका स्टेटमेंट फॉर समन से आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है. सो इफ दैट विटनेस यूज्ड टू कम टू द ऑफिस, असेसिंग ऑफिसर विल रिकॉर्ड द फिजिकल स्टेटमेंट एंड ही शुड इन्फॉर्म यू दैट सो एंड सो विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है. देन आपको अपॉर्चुनिटी, आप उस स्टेटमेंट का कॉपी मांग के उसको क्रॉस एग्जामिन करो. कई केसेस में हमने देखा है असेसिंग ऑफिसर पहले से बता देता था आपको कि ये डेट पे मैंने समन इशू किया है, विटनेस को बुलाया है, आप भी आ जाओ, आप सामने सामने क्रॉस एग्जामिनेशन कर लो. तो वो ऑब्वियसली वो आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, राइटिंग में रहेगा पूरा. अब फेसलेस हो गया है. फेसलेस में भी हमने प्रैक्टिकल देखा है कि असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस में ही जब असेसी ने मांगा है क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी, असेसिंग ऑफिसर ने बोला है कि ठीक है हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फिक्स करते हैं एक डेट पे, विटनेस को भी उधर ही ज्वाइन करना है, वो डेट पे वो टाइम पे आप भी ज्वाइन कीजिए एंड आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर लीजिए. So even in faceless, I would suppose that firstly they say that the recordings are being made of the faceless VC hearing, and if that is so, then they can provide you the copy of that hearing, and you can just note down whatever the questions and answers have been put to the witness. And if not, then you can yourself note down whatever the witness has said. And when the assessment order is passed, if there is some variation in that, then of course you can take that point in the appeal and then ask for the copy of recording, and then you can take objections. Yes. And last question we will take, that is, Yes. can cross-examination be postponed for a while? Yes. So if the officer has given you a particular date on which he wants to call the witness, and if you are for some reason you are not able to attend on that date, you can ask for a small short adjournment to the officer, but it depends on that officer and at what stage of the proceedings you are asking for the adjournment. If it is at the fag end of the assessment proceedings, he might not intend to give you any more adjournment. But normally, if you ask during the course of assessment proceedings, there is no rush to close the proceedings. He should oblige and he should accommodate your request. Yes. Yes. Thank you so much, Abhayji, for the very interactive and very informative speech you have given. Thanks are also due to all the participants. I can see around 50 participants were there, and many of them even have asked their queries. And I believe with this presentation, the queries are resolved, and even the knowledge about the Evidence Act is with now the practitioners, and they can use them while their practice in litigation matters. So I hope this concept of having a different topic on Friday Fundas is well received by everyone. And please look out for the notice of the next meeting, wherein we'll be having some another topic with another wonderful speaker. So at the end, I thank CA Abhhay Agrawal ji for sparing his valuable time and sharing his knowledge with the participant. Thank you, Abhay ji, and thank you all the participants. Thank you, Abhijit sir. Thank you everyone, all the participants for patience hearing. And I have shared my email ID and contact number. If somebody has any more queries, they can mail me. So yes, that's it from my side. Thank you. Certainly, I declare this webinar is concluded. Thank you so much.